Good morning, students. As we already started the friction lesson, in the friction lesson, we discussed about the types of the friction, in that static friction, sliding friction, rolling friction, and the fluid friction. Then again, we discuss about the causes of friction and which type of surface affects on the friction, that things we discussed in last period. Now it's time to discuss about the factors affecting friction. As we know, friction increases the motion, also friction decreases the motion. So it's time to discuss about, in order to determine various factors which affects the force of friction. Okay, so let us discuss with one activity. So here one table is there in front of you, one table is there. On that table one inclined plane is there, and on the inclined plane already one sail is there. So here three types of surfaces are there. Downside it is already written: wooden surface, metal surface, and the cloth surface. So the first, it's times of the wooden surface. By using the wooden surface we will see how much distance covered the sail. So whenever we push the sail, so that time sail covers some distance. यहाँ पे आप देख सकते हो सेल ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है. By using the flag वी हैव टू मार्क दैट डिस्टेंस. सो वुडन सरफेस का यूज़ करके वहाँ तक था. नाउ सरफेस चेंज किया है, नाउ मेटल सरफेस इज देयर. अगेन सेल को हमें पुश करना है. सो दैट टाइम यू कैन ऑब्जर्व द सेल कैन कवर मैक्सिमम डिस्टेंस एज कंपेयर टू द वुडन surface. Okay, the metal surface is having less friction as compared to the wooden surface. Now third surface is a cloth surface. So by using the cloth surface, you can see by using the yellow mark, it is already indicated that sail is covered that much distance. So here three surfaces are there: wooden surface, metal surface, and the cloth surface. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेटल सरफेस का जब मेटल सरफेस था तो सेल ने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया था बिकॉज इट इज़ हैविंग लेस फ्रिक्शन. उससे ज़्यादा फ्रिक्शन है वुडन सरफेस का, यहाँ पे ग्रीन मार्क दिखाई दिया है. सो दैट डिस्टेंस इज कवर्ड बाय यूजिंग द वुडन सरफेस. सो एज कम्पेयर टू द क्लॉथ सरफेस, वुडन सरफेस का जो भी फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम था, कम था. और सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो था वो था क्लॉथ सरफेस की वजह से. जैसे कि येलो फ्लैग आप दिखाई दे रहे हैं, सो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन मिला था. सो फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन द surface of friction is depend upon the surface. Now the next is friction is depend upon the mass. Factors: friction is depend upon the mass of the moving object. Here we are having two bricks. One is a 5 kg brick and another one is a 2 kg brick. Which brick goes the furthest? Okay, which brick goes the furthest? So I think we all of you will know about that. The 2 kg brick goes the फर्देस्ट बिकॉज लाइटर ब्रिक इज 2 kg. ओके, जिसका वेट कम है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी. सो द फोर्स विथ विच द टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर, यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन है दोनों सरफेस की वजह से होता है. इफ मास इज मोर, सो दैट टाइम इट इज़ हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्शन. यहाँ पे आप 5 kg का देख सकते हो, इट इज़ हैविंग अ मैक्सिमम फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू द 2 kg ब्रिक. सो इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज इज मोर. अगर मैक्सिमम वेट है तो उसमें इरेगुलरिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, और लेस वेट है तो उसमें इरेगुलरिटीज कम होती है. सो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बोथ द सरफेस. फ्रिक्शन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ surface and friction is depend upon the mass of the object. Now here we are going to discuss about the advantages of the friction. Next is the advantages of the friction. So the first advantages of friction is friction enable us to walk freely. Okay, one can walk on any surface due to the friction between the sole of shoes and the ground. अगर फ्रिक्शन हमारे ग्राउंड में और हमारे शूज़ में फ्रिक्शन नहीं है, सो दैट टाइम देयर पॉसिबिलिटीज टू स्लाइड ऑन द surface. In order to walk from one place to the another, one applies force against the ground with his feet, and in the absence of friction, one should slip as soon as the person starts walking. On the other hand, walking on ice is very difficult because it has a very little friction. Okay, if friction is less, so that time we are unable to walk on that surface. हमारे शूज़ में और सरफेस में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हम विदाउट स्लाइडिंग हम अच्छे से उस सरफेस से वॉक कर सकते हैं. देन इट हेल्प अस टू सपोर्ट लैडर अगेंस्ट वॉल.
Okay, so friction is extremely helpful when it comes in reducing the speed or stop on moving object. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें स्टॉप करना है या मूव करना है, सो दैट टाइम फ्रिक्शन इज टू मच important. Okay, then again, similarly, various automobiles like bikes, cars, buses, and trucks are able to move on the road due to the friction between the road and tires. अगर टायर में और रोड में फ्रिक्शन नहीं होगा, so that time it is very difficult to drive on the road. Okay, brakes of vehicles work due to the friction. जो भी हमारे बाइक के, कार के ब्रेक्स होते हैं, वो ब्रेक्स जो है वो बस फ्रिक्शन की वजह से ही वर्क करते हैं. इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर, सो दैट टाइम ब्रेक्स का कुछ यूज ही नहीं होगा, ब्रेक्स हमारे वर्क ही नहीं कर सकते हैं. देन एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इज हैवीली यूटिलाइज इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन friction is again helpful when it comes to reducing the speed or to stop the moving object. It becomes possible to transfer one form of energy to another by using the friction only. Object can be pulled up without slipping by the friction only. So these all are the advantages of the friction. Now here we are going to discuss about the disadvantages of the friction. किसी चीज़ को advantages होते हैं तो उसके साथ साथ disadvantages भी होते हैं. So the first disadvantages of the friction is a large amount of energy which can be utilized to do an activity gets wasted due to the friction. Okay, जो भी एनर्जी हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली वो वेस्ट हो जाता है. इफ समवेयर फ्रिक्शन इज नॉट देयर, सो इजीली वी कैन मूव द हेवियर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. Heat is also produced due to frictional force from numerous machines which are moving. जो भी एनर्जी है, इट ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन, सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट. ओके, वो किसी भी चीज़ के मोमेंट को रेजिस्ट करता है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है. देन इट कॉजेस वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन्स. मशीन में भी जितने भी लॉसेस हो जाते हैं, वेयर एंड टेयर लॉसेस हो जाते हैं. इसका मतलब एक पार्ट मशीन का दूसरे पार्ट के ऊपर कंटिन्यूस उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से जो एनर्जी लॉस हो जाती है, दैट लॉसेस, उसमें n नंबर ऑफ मशीन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और वो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है. इट डिक्रीजेस द लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल. हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर उनका फ्रिक्शन होने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. जैसे हम हमारे बाइसिकल में भी देख सकते हैं, अगर हम उसे ग्रीसिंग नहीं करते प्रॉपरली तो वहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होने की वजह से वो जो पार्ट है वो ख़राब हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सिंस फ्रिक्शन इज़ यूजफुल इन some cases, it is useful in some cases while harmful in some cases. So friction is called as necessary evil. So the friction, it is useful in some cases but it can be harmful in many of the cases. So due to the friction, the various moving parts of the machines make noise. Sometimes these noises are so loud and unpleasant so that it can damage the ears. It is also force a person to wear an earplug who works with the machinery to avoid very high noise level. So some cases friction is very useful, but in some cases friction is having many disadvantages. If किसी कंपनी में हम फ्रिक्शन यूज़ करते हैं, किसी मशीन में अगर फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे टू मच नॉइज़ क्रिएट होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. सो दैट टाइम द पर्सन हैव टू वेयर द एयर मशीन्स ऑल्सो, क्योंकि वो नॉइज़ की वजह से उनके एयर को कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. सो फ्रिक्शन की वजह से वेयर एंड टेयर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. जितने ज़्यादा एडवांटेजेस है फ्रिक्शन के, उतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी है. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज द एडवांटेजेस. सो ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली वन कैन वॉक ऑन द सर्फेस. ओके, फ्रिक्शन की वजह से हम सरफेस पे चल सकते हैं. देन वी कैन अप्लाई द ब्रेक्स एंड फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू reduce the speed or stop the moving object. So these all are the advantages of the friction. And when we discuss about the disadvantages, so many disadvantages are there. So large amount of energy can be wasted by using the friction. Energy is also
also wasted. Then friction can also wear and tear losses of the different objects. Due to the friction only many objects lifespan is getting reduced. Object का जो भी lifespan है वो कम हो जाता है. And due to the friction also various moving parts of machines make noise, and sometimes that person have to use the air machines also, and they have to suffer from air difficulties also. So these all things due to the friction only. So I hope student, the causes of friction is happen due to the only surface and the mass. फ्रिक्शन के जो भी कॉज है, एक तो है सरफेस एंड अनदर वन इज अ मास, एंड द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द friction. So I hope your concepts are clear now. Still you are having any doubts, so you can send me the message. Today you have to prepare the notes and send me on my personal mobile number.